Hello guys, before I go on in this video, I'm supposed to give you a few words of warning. अगर आप अपना बहुत सारा टाइम और पैसा IELTS में सेव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप करने की मिस्टेक मत करें। इस वीडियो को एंड तक देखें और जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ उसको अपने लाइफ में अप्लाई करें और आपके स्पीकिंग के स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं और आपका टाइम और पैसा दोनों सेव हो सकते हैं। और इस रूल को अप्लाई करने के बाद आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव और प्रोफिशिएंट बन सकती है। My name is Renexa Education. I am highly experienced IELTS expert, having more than 18 years of experience. Luckily, I have spent many years in carrying out research in English and IELTS. As a very fruitful result of this, I have developed so many effective strategies and techniques which hold the potential to bring much needed turning point and considerable value in your IELTS test preparation approach. And I'm going to use mix of English and Hindi language to ease your understanding. In other words, I can say the audio in this video will be bilingual. जो रूल इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उसे कहते हैं SSR। इन रूल्स को मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और जो बिगिनर हैं और जो जिनकी स्कूल लेवल इंग्लिश में अच्छी बैकअप नहीं है। अगर आप भी इस स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं और आप अपने स्किल्स को बहुत तेज़ी से डेवलप करना चाहते हैं तो ये रूल्स आपके लिए एक प्रेशियस गिफ्ट साबित हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दिस रूल कैन बी अ बून फॉर यू। ओके, सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाई देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजन टू फॉलो दिस रूल्स एंड इफ यू आर फोकस्ड और आप बहुत ही डिटर्मिन्ड स्टूडेंट है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, then I feel honored and glad to teach you. Okay, let's break this term apart and see what does each term mean. And the first इसका meaning है slow. अगर आप न्यू हैं और बिगिनर हैं और अगर आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं IELTS के स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने में और चाहे फिर आपकी स्कूल लेवल ज़्यादा बैकअप नहीं है तो आपको हमेशा स्लो बोलना चाहिए स्पीकिंग में। ओके, अगर आप न्यू हैं अगर आप स्लो बोलते हैं आपको टाइम मिलेगा, आपको अच्छा टाइम मिलेगा सोचने का। ओके, जिससे आपकी लैंग्वेज काफ़ी स्टेबल होगी। और however, if you speak very fast, you are highly likely to make many mistakes which will spoil your speaking and all the performance. Okay? इस सिचुएशन को हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड लॉजिकल एग्जाम्पल के साथ। सपोज करो जब आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं और आपके स्किल ज़्यादा डेवलप नहीं है और आप बिगिनर ड्राइवर हैं, तो इस सिचुएशन में अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट कार चलाते हैं तो क्या होगा? जस्ट टेल मी। The obvious answer would be in the mind that there can be many fatal accidents, and as a consequence, you can risk your own life and also the lives of other people on the road. So लॉजिक क्या कहता है? जब आप न्यू हैं, जब आप न्यू ड्राइवर हैं, स्लो से स्टार्ट करें, हमें कार स्लोली चलानी होगी। ओके, सो वंस यू try to gain the control over the car, then you may accelerate your car a little, but always in the stable manner. Okay, so same can be applied here in the language. आपका लैंग्वेज पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है और आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो क्या होगा? Everybody knows there can be many mistakes and inaccuracies may emerge in your language. इसके साथ आपके रिजल्ट क्या होगा? 5 और 5.5. ओके, सो आपको करना क्या है? फॉर 1 month और 1.5 month कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं इन रूल्स के ऊपर। ओके, उस प्रैक्टिकली इन रूल को अप्लाई करें अपने लैंग्वेज में और इस रूल को अपनी एक हैबिट बनाएं। सो देन यू विल सी द मैजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ दिस रूल्स इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करता है, यू लाइक टू गो टू रेस्टोरेंट्स, अगर हम फास्ट बोलेंगे सच एज आई लाइक टू गो टू रेस्टोरेंट, देयर आर मैनी रेस्टोरेंट्स इन माई एरिया एंड आई लाइक टू गो टू देयर रेस्टोरेंट, द नेम्स नो यू सी, इसमें बहुत सारी स्ट्रगल थी, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। और सेम आंसर हम डिफरेंट मैथड में बोल सकते हैं, एक स्लो मैनर में। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यस सर, आई लाइक टू गो टू रेस्टोरेंट्स, but especially I love to go to restaurants on Sunday because on Sunday I'm absolutely free from my work and so we all together love to eat out, especially on the Sunday. Okay, so इस आंसर में
काफ़ी स्टेबिलिटी थी. ओके, सो इस आंसर को आपका इंटरव्यूअर बहुत ही अप्रूव करेगा और आपको जो आपको बैंड चाहते हैं उससे ज़्यादा बैंड आएंगे. ओके, okay, let's discuss about second S. Second S का मीनिंग है सिंपल. जब भी आप IELTS में न्यू हैं और अगर आप स्पीकिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और या फिर आपके स्कूल लेवल स्पीकिंग में ज़्यादा बैकअप नहीं, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप हमेशा सिंपल बोलें, सिंपल आंसर देने की कोशिश करें. कम्प्लेक्स वर्ड, कम्प्लेक्स ग्रामर को अभी अवॉइड करें. ओके, फर्स्टली अपनी लैंग्वेज को स्पीकिंग को सिंपल बनाएं, सिंपल स्पीकिंग, सिंपल आंसर दें, स्मूथली बोलें और इसको एक नेचुरल वे में बोलें. ओके, अगर आप इसको नेचुरली बोलते हैं और सिंपल आंसर देते हैं, इससे भी आप 6.5 7 बैंड बड़े इजीली ले सकते हैं. ओके, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं जो हमेशा कॉम्प्लेक्स वर्ड और कॉम्प्लेक्स ग्रामर लगाने की कोशिश करते हैं, बट उन पर उनका ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता. ओके, and the result is 5 or 5.5. Okay, so firstly answer को simple but smoothly and with full control बोलने की कोशिश करें. Okay, इससे भी आपका बहुत सारा टाइम और पैसा सेव हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको हर रूल का एक लॉजिकल रीज़न बताऊंगा क्यों इसको यूज़ करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीज़न है. सपोज करें जब अगेन ड्राइविंग एग्जाम्पल, जब आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं, सो आप डायरेक्टली एक्सपेंसिव कार से ड्राइविंग सीखना सही नहीं होगा, जैसे BMW और मर्सिडीज. सो फर्स्टली हमेशा जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हम लेस एक्सपेंसिव कार यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लेस एक्सपेंसिव कार से मारुति. ओके, इससे आपकी एक सिक्योरिटी मेंटेन होगी. ओके, सो धीरे धीरे जब आपके स्किल्स डेवलप होंगे देन यू कैन यूज़ योर ओन choice of car. Okay, so let's move on to the next word. Lastly, we are left with R, which means realism. मैं जहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन देना चाहूँगा, जब आप कोचिंग IELTS की कोचिंग स्टार्ट करते हैं पहले दिन से ही आप रियलिस्टिक आंसर देने की कोशिश करें. ओके, द आंसर विच आर स्ट्रांगली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. These type of answers are very unique and extraordinary. And in this way you can easily create indelible and strong impression on your interviewer, and otherwise your answer can be considered quite boring, ordinary and trite. Okay, ऐसे आंसर जो स्टूडेंट बहुत बार बोल चुके हैं. ओके, सो ऐसे आंसर अवॉइड करें और अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग आंसर देने की कोशिश करें. अगर आपका आंसर एक सिचुएशनल आंसर है जो आपकी एक सिचुएशनल या पर्सनल सिचुएशन पर बेस्ड है, ऐसे आंसर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूनिक होते हैं. ऐसे फैक्चुअल आंसर को इंटरव्यू द्वारा काफ़ी अप्रूव किया जाता है. ओके, एंड दे बिकम वेरी हैप्पी हैविंग लिसन योर आंसर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, if someone asks you question why people go to restaurants when they want to celebrate something, the simple answer can be yes sir, people go to restaurants because people go to restaurants for celebrations because they love to eat fast food and junk food. So this is the main reason why people go to restaurants for the parties. Yeah, that's right. This is the one approach. And there can also be the second approach, which can be realistic. For example, yes, sure, people love to go to restaurants, especially in the bigger cities, for organizing the parties. The first reason is the narrow space in the home, by which they cannot be able to hold the parties comfortably in the home. However, in the restaurant there are bigger halls which are specially designed to hold the parties. So this is the first reason why they choose the restaurant. And the second reason is that there are highly professional chefs who have years of experience and they can prepare really delicious food for your guests. Okay, so these are two main reasons why people choose restaurants. So सेकेंड आंसर काफ़ी रियलिस्टिक आंसर था. इसमें आपने पहले पॉइंट दिया, उसको एक्सप्लेन किया. ओके, सो दिस कैन बी द बेस्ट अप्रोच. So if you give that type of answer from the first day, you can easily go up from 5.5 to 7 within a few days. So finally, if you are a beginner, if you have been struggling to develop your English speaking skills for a long time, and you have become frustrated and desperate to get the band score, or you have become a victim of wrong guidance, then put this rule in practice for constantly 1 or 1.5 months. Then you can see the magical influence in your English learning approach.
By using these rules, you can easily save your precious resources such as time and money, and you can have instant benefits. You know that money once lost can be recovered, but the time once lost can never ever be recovered. Okay? So choose the right guide who have years of experience, who can easily save you, and they can definitely save you. So, if you like this video, you can subscribe to my channel and hit the notification button to receive more value-adding English videos or IELTS videos. Thank you. Thanks for watching this video.